honor and pleasure to welcome all of you to Goa for the 56th International Film Festival of India. Ladies and gentlemen, it's only fitting that the very first formal component of this year's IFFI that we are inaugurating today is going to be the Waves Film Bazaar 2025. I extend a very warm welcome to the filmmakers, producers, sales agents, festival programmers, technology partners, financiers, media representatives, and friends from India and across the world. Friends, Film Bazaar has always been an integral part of IFFI. But if you have noticed, we have come here today in a new avatar called as the Waves Film Bazaar. And my visit today will lead to active and practical cooperation between our two countries. It is an honor to share my congratulations on this meaningful occasion and to celebrate the friendship between India and Korea. I am honored to perform Indian song. One as a creator like you, and once as a K-pop artist, and today as a member of the National Assembly. Shukriya. Sujalam, Subalam, Mataram, Vande Mataram, Shalalam, Shalalam, Susmita, Dushita, Taranim, Balanim, Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. We are celebrating 56th International Film Festival of India that's going to begin today. Our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision and our Prime Minister mentioned in Waves. I quote our Prime Minister's quote. Today, India is emerging as a global hub for film production, digital content, gaming, fashion and music. This is the dawn of the orange economy in our nation. So our Prime Minister mentioned in that big event. In this 19th edition of Waves Film Bazaar brings a significant expand of many dynamic marketplaces, strengthening its global footprint this year with a features such as here the co-production market, screen lighting lab, work in progress lab, weaving room, knowledge series. So various activities are going to take place from today onwards up to 24th of this month, this Waves Bazaar. कुछ ही देर में हमारे यहाँ ग्रैंड इफी परेड जो कार्निवल ओपनिंग सेरेमनी को मार्क करती है शुरू होने वाली है और यहाँ पे सितारे, बॉलीवुड सितारे, फिल्मों के सितारे, फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स, स्टार्स, सबका आना शुरू हो गया है। ये रेड कार्पेट अभी गोल्ड स्टार स्टडेड कार्पेट बनने वाला है। आपको, मुझे इतनी क्यूरियोसिटी है यहाँ पे कौन आने वाला है, यहाँ पे फ्लैग ऑफ करने के लिए किसके शुभ हाथों से ये फ्लैग ऑफ होगा। यहाँ की जितनी भी फिल्में आज इफी में स्क्रीनिंग के लिए रेडी होने वाली हैं, ये सारे ऑस्कर नॉमिनी फिल्म्स हैं। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल जा चुके हैं, वेनिस फिल्म फेस्टिवल जा चुके हैं, द मोस्ट पॉपुलर कान फिल्म फेस्टिवल भी जा चुके हैं। इतने सारे इंटरनेशनल स्टार्स, फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री और रीजनल फिल्म इंडस्ट्री से भी सितारे यहाँ पे रेड कार्पेट में प्रेजेंट है। दिस कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा is just getting bigger and bigger.
ओ माय गॉड, मुझे दिख रहे हैं रिनाउंड फिल्म मेकर शेखर कपूर जी, जिन्होंने मिस्टर इंडिया, बैंडिट क्वीन, मासूम, इतने सारे मूवीज बनाए हुए हैं। ओ माय गॉड, वो फेस्टिवल डायरेक्टर हैं इफी के। ही इज द फेस्टिवल डायरेक्टर ऑफ इफी 2025. Such an honor. So excited. I think I can also see some really popular stars sitting on the dais, along with the dignitaries and the official committee of the 56th International Film Festival of India present here in Goa. And the crowd is getting crazy. इतने सारे सितारे रेड कार्पेट पे देख के जितनी भी ऑडियंस है वो अपनी सीट से उठने वाली है. एंड नाउ what you are going to witness is one of a kind cultural extravaganza and the opening ceremony parade. ये पहली बार ऐसी ओपनिंग सेरेमनी ग्रैंड तरीके में गोवा के स्ट्रीट्स पर लाई गई है. ऐसा कार्निवल आपने पहले कभी नहीं देखा होगा जो आज आप विटनेस करेंगे इन बिटवीन ऑल दी स्टार्स. और ये परेड 30 स्टेट्स के कल्चरल डाइवर्सिटी से डिजाइन की गई है. देयर आर 12 डिफरेंट टैब्लोज. ईच टैब्लो इज representing a state via Indian films and cinema. इससे बेटर क्या हो सकता है. एंड एआई के जमाने में हम एआई सिनेमा को कैसे भूल सकते हैं. 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोवा में होता जा रहा है, उसकी यूनिक फीचर है द एआई फिल्म फेस्टिवल एंड द हैकाथॉन. Well, there you can see the crowd is eagerly waiting. They are on their feet right now. We saw a host of stars and dignitaries already present here for the inauguration of the 56th International Film Festival of India. And there you can see the Korean star there. शुक्रिया. Wow, fantastic. This is what we celebrate. Global power, global cinema, and one world here at 56th International Film Festival of India here in Goa. And I have with me, sir, first of all, thank you so much for being here with us. Every time you're so supportive. एक बार जोरदार तालियां, ladies and gentlemen, let me ask you to step ahead a bit. So every time I see you here supporting Indian cinema, global cinema. इस बार किस चीज के लिए आप सबसे ज्यादा उत्सुक हैं, सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? मैं हमेशा फिल्म फेस्टिवल के लिए यहाँ आता हूँ. जैसे हर सिनेमा का, हर कलाकार, हर डायरेक्टर, हर सिनेमाटोग्राफर यहाँ आने को उत्सुक होता है, उसी प्रकार से मैं भी उत्सुक रहता हूँ और हर बार आता हूँ. इस बार 240 फिल्में हैं, 8 दिन में दर्शाई जाएगी और विश्व सिनेमा यहाँ देखने को मिलता है. सारे विश्व के अच्छे, मुझे लगता है कि 13 से ज्यादा फिल्में विश्व का प्रीमियर यहाँ होता है, वो भी फिल्में देखने को मिलेंगी. और भारतीय फिल्में भी, अच्छी अच्छी फिल्में इंडियन पैनोरामा की हमें देखने को मिलेगी. और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं हमेशा कला का विद्यार्थी हूँ, आज भी कला को समर्पित हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ. जैसे आप आए हैं, बहुत सारे. क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप अपना स्थान ग्रहण कर लें. मैं एक बार सबको बता दूं कि हमारे फ्लोट्स रेडी हैं, हम बहुत जल्द शुरू करेंगे द फर्स्ट एवर इसी परेड. और हमारे बीच यहाँ आ चुके हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर. जैसे इन्होंने कहा ये कला के विद्यार्थी हैं, इनके बारे में बता दूं, इनको कला की बहुत सही पहचान है और ये देश विदेश से कलाकारों को मौका देते हैं, फिल्मों में आने का चांस देते हैं. और बहुत सारे जो इनके कलाकार हैं वो आज इंटरनेशनल लेवल पे भी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं. मुकेश छाबड़ा जी के लिए जोरदार तालियां. मुकेश सर, हाउ आर यू फीलिंग हियर? एंड क्या आप गोवा से कुछ कलाकार स्पॉट करके लेकर जाएंगे इस बार? हम लोग फेस्टिवल में आते हैं इसलिए, ओनली नॉट कलाकार, अच्छे राइटर, एडिटर,
एंड डायरेक्टर सबको यहाँ पे मिलता है। ऐसा फेस्टिवल है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की शान जो है वो गोवा फिल्म फेस्टिवल है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है देश के लिए, क्योंकि वहाँ पे इतना टैलेंट होता है। इसलिए हम सब लोग यहाँ पर इसलिए आते हैं that we can spread this energy and take something home. ये सब ब्यूटीफुल पार्ट है इस फेस्टिवल का। आई एम वेरी हैप्पी। मुझे यहाँ भी बहुत सारे धुरंधर लोग मिलेंगे हर डिपार्टमेंट में, और ऑफ कोर्स इसलिए मैं यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो लास्ट ईयर मैं आई थिंक बाजार में, जो कि इधर कुछ 1-2 किलोमीटर आगे की जहां पे आपका स्टॉल था, मैं वहां गया, आपकी पूरी कास्टिंग टीम वहां पर आई थी, और गोवा के जो कलाकार हैं और इनफैक्ट जो भी कलाकार देश से, पूरे देश भर से आए हैं, दे कुड गेट अ चांस टू गिव देयर इंट्रोडक्शन या ऑडिशन वहां पर। इस बार भी है स्टॉल जो है वो मेरिट में है। इस बार भी फिल्म बाजार में हमारा एक स्टॉल है। एंड थैंक यू टू वनीता मिश्रा एंड ऑफ कोर्स संजय जाजू सर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, ऑलवेज सपोर्टिंग। ये सब इन लोगों की वजह से होता है। एंड जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, चाहे वो राइटर है, डायरेक्टर है, न्यू एडिटर है, दे ऑल आर वेलकम, नॉट ओनली एक्टर। ये सबके लिए है, तो हम सबको मिलना चाहते हैं। क्या बात है। तो आप जरा एड्रेस बता दें अगर सब जाना चाहें। अभी नहीं, बाद में 4 दिन है दोस्तों, ज्यादा उत्सुकता नहीं, अभी पहले हमने परेड देखनी है, बट प्लीज टेल अस वेयर दे कैन गो एंड हाउ दे कैन गो। फिल्म बाजार का जब भी काउंटर है मेरिट में, जहाँ पे सब लोगों के ऑलरेडी स्टॉल थे, वहीं पर सब। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम विद राकेश मेहरा सर। आई स्टार्टेड विद हिम फ्रॉम रंग दे बसंती, एंड आई एम आल्सो नाउ वर्किंग शेखर सर। आई थिंक ठीक है। थैंक यू सर। और हमारे मुख्यमंत्री साहब यहाँ आ चुके हैं। प्लीज गिव इट अप फॉर द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, डॉक्टर प्रमोद सावंत। लेडीज एंड जेंटलमैन, द मोमेंट इज हियर। वेरी शॉर्टली विल बी बिगिनिंग विद द इफी परेड, एंड the Chief Minister of the host state of Goa is finally here. In a few seconds, ladies and gentlemen, we'll be beginning with this ceremony. Munmun, are you excited? Oh, yes, absolutely. The cultural troupe is already lined up. Very shortly, we are going to announce the official start of the 56th edition of the International Film Festival of India in Goa, which has become the permanent residence, really, of IFFI since 2004, 22 years and counting. The Chief Minister of Goa is here in our midst. We have distinguished dignitaries, eminent delegates here. Many are members of the jury. Many are steering committee members. We have the festival director himself here. We have celebrities from India and around the world. We have ambassadors. Very distinguished lineup here on the stage, on the dais, as we are about to start officially the 56th edition of the International Film Festival of India. It started in the early 1950s, went to several cities. Since 2004, Goa has become its permanent home. We request all the dignitaries to please be seated. And very shortly, we are going to start the rollout of the 56th IFFI, International Film Festival of India in Goa. Very different this time around, because this time we are flagging off with an IFFI parade. We all love parades, don't we? We see them on Republic Day, but this time we are going to see them at the start of the festival. There's going to be so much Indian culture, particularly Goan culture, reflected here. We're going to see culture from other states as well. We are going to see leading production houses, because remember, this is as much a celebration of culture as it is of cinema. There are celebrities from India and around the world. There are filmmakers. There are artists of all kinds. IFFI is not just, Karan, about cinema, it's about culture. It's also about the new form of cinema. Since you're an actor, you would know the role VFX, visual effects, animation, etc. play. Yes, if I have VFX, I can replace you with Deepika Padukone standing next to me. Yes, Karan, and so can I. We're just waiting for the governor, sir. We will be here very shortly, and just good to go. So in a short while from now, we are going to start the 56th edition of the International Film Festival of India in Goa with an opening parade. It's going to be grand. It's going to last long. It's going to be a moment of magic and fun and celebration and pride for all of us as we celebrate and mark Indian culture and Indian cinema. Can we resume some music?
All right, ladies and gentlemen, I have with me now, I can see श्री अनुपम खेर जी, जो कि मेरे हिसाब से खुद में एक अपनी फिल्मोग्राफी है. सर 535 प्लस फिल्म्स, प्लस बोला है मैंने. 549 films, ladies and gentlemen. Like I said, he's a filmography in his own self. So we are very excited. For the first time, we are having the IFFI parade. Like you can see on the right, the artists are waiting, representing their states. Production houses are waiting, representing themselves. We'll be having the IFFI parade for the very first time, and you'll be witnessing them in a short while. How excited are you, and how do you like this idea? मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय मंत्री जी का, जाजू जी का, बाला जी का, शेखर जी का मैं अभिनंदन करता हूं और मैं बहुत खुश हूं कि 56वीं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल गोवा का शुरू होने जा रहा है. कितना अच्छा माहौल है, कितने आपके जैसे सब रंगदार लग रहे हैं. मुझे अच्छा लग रहा है, कितने खूबसूरत चेहरे यहाँ पर हैं. मैं बधाई देना चाहता हूँ इंडियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को, गोवा की गवर्नमेंट को, गोवा के लोगों को. खासकर गोवा के लोग इतने कमाल के लोग हैं ना कि ये फेस्टिवल को अपने साथ दिल में लेकर चलते हैं. एंड ऑल द बेस्ट. मैं एज ए असाइड इंफॉर्मेशन, मेरी 3 फिल्में हैं इस बार गोवा फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में. एंड मेरी मेन एक्ट्रेस शुभांगी भी यहाँ आई हुई हैं, मेरे दोस्त भी यहाँ पर हैं, सब लोग हैं यहाँ पर, मुजफ्फर साहब, सब लोग. एंड शुभांगी कम एंड से हेलो टू एवरीबॉडी. शुभांगी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस टैलेंट. मैंने फिल्म देखी है इनकी, तन्वी द ग्रेट, जिसमें वाकई इन्होंने कमाल का किरदार निभाया है. पूरी फिल्म इन्होंने अपने कंधों पे खींची है. शुभांगी, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको स्क्रीनिंग पे भी तारीफ की थी आपके काम की, और मैंने बोला था दैट आई हैव बिकम अ ह्यूज फैन ऑफ योर वर्क. तो आप कितना एक्साइटेड हैं इसी की ऑडियंस के सामने आने के लिए? मैं बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. ये मेरा सेकंड टाइम है गोवा में. मैंने इफ़ी के बारे में बहुत सुना है, एंड इफ़ी में पहली बार आई हूँ. दिस इज माय फर्स्ट टाइम. सुना बहुत है, एंड नाउ हमारी फिल्म यहाँ पे प्रीमियर भी होने वाली है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी एवरीबडी एंड टू मीट एंड फॉर एवरीथिंग दैट अनफोल्ड्स. अच्छा तन्वी, इसी की मैं तन्वी बोल रहा हूँ. आपके कैरेक्टर के नाम से जब आपको बुलाने लग जाए तो मतलब कैरेक्टर हिट है. यहाँ की जो ऑडियंस है ना, क्योंकि ये फिल्म लविंग ऑडियंस है, तो यहाँ की ऑडियंस कई बार ज्यादा क्रिटिकल भी होती है. वो आपको स्क्रीनिंग के बाद बताएंगे कि आपने क्या गलती की, तो क्या आप उसके लिए भी तैयार हैं? मैं बहुत रेडी हूँ. यस, आई पूरी तरह से तैयार हूँ. एंड आई थिंक वो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या अप्रिसिएशन, एवरीथिंग इज ओपन. तो बस प्यार मिलना चाहिए ऑडियंस का एट द एंड. इन्होंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. कल मैंने एक अच्छी पोस्ट डाली थी, आई डोंट take any constructive criticism from anybody who has not constructed anything. But we'll be very happy. You will love the film. It's about life. It's about goodness. Very, very few films are made about goodness. But today we are here to celebrate International Film Festival. All the best. Good luck to all of you. Thank you very much. God bless you. Fantastic. Give it up for Anupam Kher, ladies and gentlemen. मैं आपको एक काम करता हूँ, अभी बहुत सारी आपको ताली मारनी है, उसकी रिहर्सल कराता हूँ. जब भी मैं यहाँ बैठा हुआ अपना सर खुजाऊंगा, इसका मतलब आपको ताली मारनी. रिहर्सल करते हैं. 1 2 3. नहीं, मैं सर खुजा रहा हूँ ना, इनको पता कैसे. इतना सर खुजाऊंगा कि मेरे बाल ना निकल आए. थैंक यू. तो आप सबको क्यों यहाँ मिल गया है, मैं भी बोलूंगा जोरदार तालियां, पर जब सर ने सर खुजाया तो ताली जरूर बजानी है. जी सर. सर, we would have introduced you properly, but now because you're here, I'm a greedy anchor. I am very greedy, so I cannot miss this opportunity. कंजूस है. मैं greedy हूँ, मैं लालची हूँ. मुझे आपका समय चाहिए. I want your time. How excited are you being here in Goa? You can see the cheers. जी बहुत एक्साइटेड हूँ. तो इधर इसी में पार्टिसिपेट करना, और पार्टिसिपेशन ही नहीं, जो मैं 50 साल एज ए हीरो में, मेरा अभी 50 साल पूरा हुआ इंडस्ट्री को आके एज ए हीरो. अभी चलती का नाम गाड़ी है, अब ये तो दाढ़ी भी है इधर, बढ़ती के नाम दाढ़ी. तो कैरेक्टर में एक बार दाढ़ी से दिखता हूँ, एक बार बिना दाढ़ी से दिखता हूँ. और मेरे पहला मेरा पिताजी को मैं याद करना चाहता हूँ, द लेजेंडरी एन टी रामाराव, जो नेशनल फ्रंट के चेयरमैन भी थे बाद में. वो पहले फिल्म एक्टर थे, और मैं भी अभी तीसरा बार जीता हूँ एमएलए फ्रॉम हिंदूपुर. जो आज जो सत्यसाई जी का 100 ईयर्स का आज राष्ट्रपति जी वहाँ पर है. मेरे जीजा जी जो मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू जी, वो वहाँ पर सब शामिल है.
और भगवान की कृपा से अभी 4 हिट एक के बाद एक दिया मैंने, वो मैंने नहीं, मेरा पूरा टीम ने दिया। पहला था अखंडा, उसके बाद था वीरसिम्हा रेड्डी, उसके बाद था नैनकोंडा भगवंत केसरी, उसके बाद था डाकू महाराज, अभी दिसंबर 5 को आ रहा है अखंडा तांडवम 2। बस सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि सिर्फ तेलुगु ही नहीं, वो तो अभी सिनेमा तो सिर्फ तेलुगु नहीं, इट इज पैन इंडिया, सो विल कॉल इट पैन इंडिया। सो आज पूरे हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ यहाँ पर शामिल हूँ। सिर्फ ये लोग ही नहीं जो स्टेज के ऊपर है, लेकिन सामने जो है जाजी बोलते थे एक वो मंदिर है और उसमें सब भगवान है, तो मैं इनका सेवक हूँ। वैसे ही मैं बहुत खुश हूँ आज। जी सर, मैं डाकू महाराज का वो दबड़ी दिबड़ी मेरा फेवरेट सॉन्ग है सर। अभी आप देखेंगे अखंड तांडव। Fantastic. Thank you. So we are very excited and very honored to have you here. And your filmography is really inspiring. Please have your seat and we'll be beginning with the ceremony very shortly. Munmun, क्या status है? We are all about to start. The countdown is almost now coming to an end. We have the Honorable Governor in our midst. We have the Honorable Chief Minister in our midst. We have the Honorable Minister of State for Information and Broadcasting in our midst. So now the countdown is nearly coming to an end. The cultural troops have all lined up. Floats have all lined up. We are all waiting with bated breath for the IFFI Grand Opening Parade. History in the making with IFFI setting off this time, the 56th edition setting off this time with a grand opening parade celebrating Indian cinema and celebrating Indian culture. वेलकम के बाद बोलिए सीएम ऑफ गोवा प्रमोद सावंत जी एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट। Crowd that has gathered here for the inauguration of the 56th International Film Festival of India. All the important dignitaries have arrived here. There you can see on your screen Dr. Pramod Sawant, the Chief Minister of Goa, Dr. L. Murugan to his left, the Minister of State for Information and Broadcasting. To his left is Shri Shripad Naik, Rajya Sabha member from Goa, and to his left is a well-known face, Shekhar Kapoor, the renowned director who also is the director of the International Film Festival of India. We saw lots of other well-known faces earlier, Shri Anupam Kher, Shri Balakrishna, among others. And that's the section of the dignitaries here. कुछ ही देर में औपचारिक कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है of the 56th International Film Festival of India. You can see a few pictures that are being taken for posterity. And the crowd, they are happy to recognize their beloved actors and actresses whom they can see up close and personal. For all those who just joined us on Doordarshan here, we are coming to you live from Panjim, Goa, where the International Film Festival of India is all set to get underway with opening parade, which will start shortly. You can see the Honorable Governor, Shri Ashok Gajapati Raju. You can also see Shri Sanjay Jaju on the right of your screen. And there are a lot of people, some people taking pictures, some people just checking their phones. There you can see it's packed there outside, just opposite to where the dignitaries are seated. That's a nicer view of the crowd, the section of the crowd that has gathered here. And after the formal opening ceremony, we'll have a parade here, which will display India's and Goa's vibrant and diverse culture. And as we mentioned earlier, it's not just delegates from
Goa and India, but from other parts of the world also that have come here to participate in what is Asia's oldest film festival that started way back in 1952. This year, close to 250 films will be screened, and the film screenings will kick off this evening with a film called The Blue Trail from Brazil, which won accolades at several festivals around the globe, including Berlin. Starting with Berlin, you can see Mr. Anupam Kher. To his right is Srimati Delilah Lobo, who is the chairperson of the Entertainment Society of Goa, which is the nodal body, which along with the National Film Development Corporation, NFDC, that organizes IFFI. And for those who are wondering about the history of IFFI, well, it started back in 1952 in India. In 2004, it moved. The state of Goa in Panjim, in Porvorim, which is a suburb of Goa. A lot of kids have also gathered here. Looks like she's enjoying her ice cream. So there are film screenings happening in Panjim, in Porvorim. And now we are getting ready for the formal inauguration. And that's going to be by watering the plant. The Honorable Governor of Goa doing the honors. I think this is a fantastic gesture of protecting the environment, of nurturing the environment. That's the Honorable Chief Minister of Goa, followed by Dr. L. Murugan, the Minister of State. That's Shri Anupam Kher, who needs no introduction. That's Shri Shripad Naik. And Mr. Shekhar Kapoor. That's Shri Balakrishna, who's going to be felicitated. Requesting all the dignitaries to please be seated. And ladies and gentlemen, since 1952, IFFI has been enthralling us with its eclectic selection of films, culturally rich and thoughtfully curated by distinguished industry experts. And the government of India has played a key enabling on social media. It is quite a rage these days. So on that note, Karan, let's now request Shri Sanjay Jaju, Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, to please take the podium for his welcome remarks. Let's welcome him with a round of applause, ladies and gentlemen. Give it up for Secretary, Minister of Information Broadcasting, Shri Sanjay Jaju ji. Respected Governor of Goa, Madam Governor, Honorable Chief Minister Goa, Honorable Minister of State, Information and Broadcasting, Government of India, Honorable Ministers, film dignitaries, our Festival Director, ladies and gentlemen, it's indeed my honor and privilege to welcome all of you to this grand opening of IFFI, which is being tried out for the first time in the form of a carnival, which is going to celebrate the rich diversity of Indian cinema. Ladies and gentlemen, IFFI this year has many firsts. We have the largest collection of films coming in from close to 80 countries. We have films which are being premiered for the first time internationally. There are global premieres, there are national premieres, there are films which have made way into the competition section.
We had the largest number of entries, close to 3,000 entries, and from which there are few films which are part of the competition section. We also have the AI film hackathon, and on the other side of the road, we have the largest film bazaar called as the Waves Film Bazaar. So ladies and gentlemen, welcome to each one of you to this biggest round of the International Film Festival of India. Thank you very much. Thank you. Thank you, Sanjay sir. Thank you for giving us this platform. Can I please request Dr. L. Murugan, Honorable Minister of State for Information and Broadcasting and Parliamentary Affairs, Government of India, to take the podium for his remarks. Ladies and gentlemen, let's welcome him with a round of applause. Honorable Governor of Goa, Madam Governor, Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawantji, Honorable Chief Minister of Goa, Secretary Sanjay Jajuji, my colleague, Honorable Minister of State Sri Sripat Nayak ji, Anupam Kher ji, Nandumuri Balakrishna ji, and this festival director Shekhar Kapoor ji, and esteemed guest Sadananda ji, Member of Parliament from this our Goa, and Miss Kim. Today we saw that she is coming from South Korea. She is here. She sang our Vande Mataram. We are celebrating Vande Mataram 150 year. She sang our full of Vande Mataram today. So she is also here. And ministers from Goa government, member of Legislative Assembly from Goa government, MPs from, and dignitaries, film fraternities from various parts, ambassadors, and our film fraternity from South, West, East, North, all of our film fraternity here gathered, juries, and steering committee members. Namaste to you all, Vanakkam. See, every year, IFFI is taking a dimension. Today we are seeing every year our IFFI was there in Shyam Prasad Mukherjee Stadium with the cultural event. Then our IFFI starts. But this year, our Minister Sri Ashwin Vaishnavji and Chief Minister Goa, they thought this we have to do differently. That's why now the parade is going to start. This exhibits various states' cultural tradition and Goa's 12 talukas, various cultural activities, and from various states, tableaus, and cinema houses, production houses, tableaus. That's all. We are eagerly waiting. That's all going to come here. Under the visionary leader, our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, he speak about this cinema and media entertainment sector. Our Honorable Prime Minister mentioned that, I mentioned his quote, this is the time of dawn of orange economy in India, content, creativity, and culture, the three pillars of orange economy. So while this year in May, we had a summit, World Audio Visual Entertainment Summit at Mumbai. The first time a big summit was there. Our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji inaugurated that summit. That summit seems that our creative economy, our world economy. So the Ministry of Information and Technology taking various steps to give the bridge to the new creators, new young minds, creative minds to the global level, the Waves Bazaar, giving a chances to them. And also the creators from various part of the country, they are going
a global level reach towards the from the waves as well as the IFFI. The IFFI 56th edition, while we celebrating, we have to remember our former Chief Minister Sri Manohar Parrikar ji. Sri Manohar Parrikar ji thought before that this IFFI one year was there in Chennai, 1 year was there in Bangalore, 1 year in Delhi. So various world centers where the world cinema festivals, it happens one place. For example, Busan Film Festival, Cannes Film Festival, like one place. Like that, the Goa is the permanent destination for the film festival. Our Manohar Parrikar ji took initiative, and our Chief Minister is continuously supporting the Pramod Sawant ji, Dr. Pramod Sawant ji. Every year, and see how he is enthusiastically, he is participating all the small meetings also. He is giving directions to the organizers and the Ministry of INB, our secretary and his team. Everyone is gathered and they make this function is a success. We will enjoy that from today and up to 28th, the International Film Festival, various master classes and felicitations and award ceremonies and the screenings, film bazaar, and various activities going to take place. We will enjoy, we will take this opportunity to grow our cinema industry to further height. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Dr. Murugan. Like you said, since 2004, Goa has become the permanent home of IFFI, 22 years and counting. May I now request Dr. Pramod Sawant, Honorable Chief Minister of the host state of Goa, to take the podium for his remarks. A round of applause, everyone. At the opening ceremony of the 56th International Film Festival of India, IFFI 2025, Honorable Governor of Goa, Sri Kusabati Ashok Gajapati Rajuji, Mrs. Gajapati Rajuji, Minister for the State Information, Broadcasting and Parliamentary Affairs, Dr. L. Muruganji, Minister for the State Power and Renewable Energy, Sri Sripad Naikji, the Member of Parliament, Sri Sadana Shet Tanawdi, the Member of the Lok Sabha from the Kanpur, Ashwitji, the Secretary of the Information and Broadcasting, Sri Sanjay Jajuji, Anupam Kherji, Manoj Doshiji, rest all the dignitaries on the dais, all the ambassadors reporting from the different countries, the Chief Secretary, Dr. Kandavlu, the Festival Director, Shekhar Kapoor, Mr. Damu Naik, the President of Bharatiya Janata Party, Vice Chairman, Madam Dilala Lobo, the Ministers from the Government of Goa, the MLAs from the Government of Goa, the legendary actors, Sri Balakrishnan-ji, and all other dignitaries on the dais. Once again, I welcome one and all those who have come specially for the International Film Festival 2025. समेस्त गोंयकारांक हांव परत एकदा येवकार दिता आनी येवकार दिता आसतना 2004तल्यान सुरवात जाल्ले IFFI, मनोहरभाई पर्रीकरांच्या कार्यकाळात सुरू जाल्ले IFFI 2004 ते 2014 पर्यंत आमी गोंयचो प्रोग्रेस पळयता आनी IFFIची डेव्हलपमेंट पळयता. 2014 IFFI हो परमनंट व्हेन्यू गोंयाक डिक्लेअर केल्या उपरांत 2014 पासून आजपर्यंत IFFIत जाल्ले बदल आणि गोंयांत जाल्ले बदल तुम्ही सगळ्या जाणांनी पळयल्या. म्हणून प्राऊडली सांगता आसतना खूप बरें दिसता की IFFIच्या बरोबर गोंयचोय डेव्हलपमेंट तितक्याच मोठ्या प्रमाणात जाल्या आणि आम्ही सगळेजाण आज पहिले फावटी या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाच्या निमित्ताच गोंयचे कल्चर, गोंयची क्रिएटिव्हिटी आम्ही हांगा सेलिब्रेट करता. गोंयांतलो कल्चर आणि क्रिएटिव्हिटी दाखोवपा खातीर गोंयांतलो फ्लोट जाका आमी शिमग्या उत्सवाच्या निमित्तान मनयतात, गोंयांतल्या कार्निवलाच्या निमित्तान तयार केल्ले फ्लोट आज आम्ही इंटरनॅशनल मळाचेर दाखोवपा खातीर आम्ही आज तांकां हांगासर हाडल्यात. त्या खातीरच हांव परत एकदा समेस्त गोंयकारांचें स्वागत करता आणि गोंयांत आयिल्ल्या म्हज्या सगळ्या इंटरनॅशनल गेस्टांचें स्वागत करता. Goa has always believed in celebrity and creativity, and today the Goa once again celebrating the cinema, the most powerful storytelling in the world. Friends, people often ask why Goa. Let us talk about the why Goa is the perfect home for the IFFI. Why the IFFI flourished here for more than 2 decades? The answer is simple. The Goa is ready to offer the world-class infrastructure, a tourism and hospitality industry trained to welcome the world,
a festival vibes that reality showcase the culture, creativity, and scenic beauty and efficiency in the state of Goa. This year, IFI, we meet under the powerful theme, the convergence of creativity and technology. Cinema today, along with the being an art or the form of entertainment, is a growing industry, incorporates the innovation, artificial intelligence, visual effects, the VR, AR, and digital platform, and global collaborations. India is the forefront of these creativity revolutions, and IFI continues to be the bridge between the Indian talent and global possibilities. I'm honored to announce that Japan is the country of focus. The Japan and India, the deep cultural ties, the spiritual connections, and a long history of the artistic exchange. Japanese cinema has inspired the generation across the world, and their participation enriches this festival in a special way. This year, the IFI Mile returns from the EST to Kala Akademi, filled with the cultural performance, the interactive film-related stalls, the music and live shows, the food courts and experiential zones, the public engagement events. Every evening, the musical show will welcome the crowd with the energy, showcasing the vibrancy. We are turning the IFI into the celebrating the Goa's cultural diversity. This year, the IFI shall also focus on the thrilling traditions of Carnival and Romtame as well. This performance shows the future of the top 10 groups of the Goa. We are ensuring our tradition artists recognition on the global stage, making sure our local at-rich culture is highlighted. I'm proud to mention that this year, 2 Goan films, Hidden Claudia and The Pilot, have been selected for the gala premiere section of the prestigious IFI 2025. We're proud of our Goan filmmakers whose stories, ideas, and voices are reaching the global audience through IFI. The 5 films have been selected by the distinguished jury chaired by the Sri P. Sheshadri in the Goan section. In Goa's director cut, The Zero Bulb, Halat, and My Dad Invented Vada Pav. In Goa's producer cut, The Merarki by the Sea and The Ghar. And we congratulate all the Goan cast, crew, directors, and producers. Your success is Goa's pride. Goa is today India's most preferred shooting destination. This is not only because of the Goa's being the scenic beauty, but it is the result of strong policy reforms like the film finance scheme up to the 50 lakhs for the A category films, the revised film shooting rules for faster permission, the single window clearance is under process, the support for the foreign production through national incentive schemes, the promotion at the film bazaar and international platforms. We are committed to making Goa the global film production hub. The Goa is already providing the targeted financial assistance to support the filmmakers in making the good cinema. We are reviving the more structured incentive models that match the global film destinations because we want the filmmakers to choose Goa not just as a beauty but as the ease of work, efficiency and supportive system. I also would like to say that the Goans are ones and make that festival truly specially. Our local artists, hospitality industry, the cultural group, youth organization all come together to make IFI an unforgettable experience. It is a shared ownership that makes the Goa the soul of IFI. Friends, the India is emerging as a global soft power, and under the leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, and Indian cinema reaching at the international heights. The IFI is now a platform where the Indian creators, producers, and the storytellers meets the world. And Goa is proud to be the gateway for this global experience. Our commitment is clear.
make Goa as a creative capital of India, strengthen the film infrastructure, support Goan filmmakers, bring the world cinema to Goa, and promote the Goa as an international filming destination. Build a year-round filmmaking ecosystem. Today, every filmmaker, artist, producer, the cinema lovers present here, Goa welcomes you. We invite you to explore our state, shoot your film here, collaborate with the local talent, and create new story. Goa is not just a venue. Goa is an experience. Goa is in your partner in a creativity. As we inaugurate IFI 2025, let us celebrate the power of storytelling, the unity of culture, the future of filmmaking, and Goa's growing role in India's global cinematic journey. Let us together make this edition, IFI 2025, is most memorable one yet. I welcome everyone to the Goa's 56th International Film Festival of India. Once again, welcome one and all. Thank you. Jai Bharat. Thank you so much, sir. Can I please request our Honorable Dr. L. Murugan, sir, to please step forward as we felicitate Sri N. Balakrishna for his cinematic journey. Can we please also request once again Dr. Pramod Sawant to please join us in felicitating the journey of Sri N. Balakrishna in Indian cinema over the last 50 years. A round of applause, ladies and gentlemen. N. Balakrishna, Indian actor, producer, filmmaker, and Padma Bhushan awardee, being honored and felicitated for completing 50 glorious years in the cinema industry. Over a career spanning more than 5 decades, he has acted in over 100 films, known for his roles in fiction dramas, mythological films, and action movies. Some of his notable films include Gautami Putra Satakarni, his 100th film where he played a historical ruler, as well as Narsimha Naidu, Simha, and Legend, for which he's won several awards, being felicitated on the dais. Fantastic. So please say a few words. Yeah. Please say a few words. I want to know from the horse's mouth. Okay, fine. I've told Honorable Chief Minister of Goa, Mr. Pramod Sawantji, and His Excellency the Governor of Goa, Pusapati Ashok Gajapati Garu, and our Minister of State, Information Broadcasting, Thiru Anna Murugan, and rest Mr. Sanjay, everyone. I thank everyone for you to inviting me to this IFI 56th celebrations. And as I told you like before, happy about it that I am born to an illustrious Vagrata Sampakro, Vagrata Pratipati, Jagata Pidra Vande, Bharati Parmeshwara. Na Gayatara Paramantra, Namatu Paradevta, Nahare Bharata Strata, Namruta Padgam Param. As far as Pardhavya, Raturuputar Bhakti Guruna, Santra Mamsi Satram Kasmai Sarvanda Murti Putri. So, first, I'm very lucky to be born to those parents because one, I told you, Mr. N.T. Rama Rao, who was an actor and then a politician who changed the total condition of the country itself, not the Telugu, then the combined state, Andhra Pradesh. Okay, that's, and then as a following the footsteps of my dad, my constituency is Hindupur, near Bengaluru, Karnataka, which falls under Andhra Pradesh, in Anantapuram Zilla. This is the third time I won. My dad was also elected 3 times from Hindupur. Okay. And the third one, brother, which I wanted to express is that I also run a cancer hospital. It was started 20 years back. That was my mother expired of cancer, and she wanted that even the poor has to afford for cancer treatment with international standards. So that's where my dad, after death,
He started the hospital, Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital and Research Institute in Hyderabad, which is now one of the leading cancer hospitals in the country. Since 15 years, I am the chairman. Before me, there were many chairmen and board members. And through that, it's a trust. We do free service. And also for white card holders, we give concessions. Even without white card who are there, we also give them concessions. We have all the latest equipment like robotic surgery, PET scan, everything. You name it and it is there. So that's what I wanted to also remember my mother and also mainly the support of my wife. This is Vasundhara Devi. Where are you? Hello. What's her name? Her support, without her, I wouldn't have. Round of applause, everyone. And also the support of my family, both cinema and politics. Because my eldest son-in-law is Mr. Nara Lokesh, who is the IT and Education Minister of Andhra Pradesh, who is the son of Chandrababu Naidu. And my second son-in-law is MP from Visakhapatnam, where Google is coming. So, like that, support both wise, politically and cinema wise. So I thank everybody for recognizing my, I don't say talent, it's a never-ending story. So it goes on. I'm just 50 years old, into the film industry. So don't ask me about original age, okay? Thank you, thank you. Thank you, all very much. thank you, N. Balakrishna. Thank you so much. ji. Give it up for N. Balakrishna, ladies and gentlemen. And like he has an institution for cancer, I request everyone, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो, अपने fellow human beings के लिए अगर आप कुछ भी कर पाएं, I think that will contribute. Moving on, can we please request Shri P. Ashok Gajapati Raju, sir, Honorable Governor of Goa, to please say a few words. And I promise you, we will start with the parade after this. Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant ji, Honorable Minister for State for Information and Broadcasting, Government of India, Sri L. Murugan ji, Honorable Ambassadors, Member of the Jury, distinguished personalities from the entertainment industry from India and across the world, enthusiastic delegates of the festival, and my dear viewers. It is my privilege to attend the open ceremony of the 56th edition of IFFI 2025 in our beautiful state of Goa. I am informed that this is the 22nd consecutive year that Goa has hosted this prestigious festival. This also happens to be my first experience of IFFI, and I am delighted to be part of it. This year, the festival brings together 270 films from 84 countries, offering a rich blend of world cinema, Indian cinema, and emerging talent. It is heartening to see that IFFI continues to serve as a meaningful platform for creative exchange, new collaborations, and the celebration of cinematic excellence. I would also like to place on record my appreciation for the efforts of the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and his team. Under his leadership, Goa has continued to strengthen its position as a vibrant and welcoming home for IFFI, ensuring that the festival grows in scale, participation, and public engagement every year. I am also reminded of my former ministerial colleague and friend, Sri Manohar Parekar, who brought IFFI to Goa in 2004. His work during the very first
given edition ensured that Goa became the permanent venue. Given the cosmopolitan character of the state, the cultural richness of its people, and its excellent global connectivity, it is natural that film lovers look forward to IFFI in large numbers every year. I'm told that for the first time the festival is opening with a cultural float parade instead of the traditional gala ceremony. This is a welcome initiative as it allows our artistic community to showcase the diverse cultural heritage of Goa and brings the festival closer to the people in a refreshing new format. IFFI has always been more than a film festival. It is a meeting ground for ideas, stories, and creative minds from around the world. It encourages young filmmakers, honors cinematic achievements, and reinforces India's position in a global hub for film and creative industries. I extend my warm wishes to the organizers, participants, and delegates. May this edition of IFFI be memorable, meaningful, and inspiring for all. I extend my heartfelt thanks to all those who have encouraged this festival. God bless us all. Jai Hind. Thank you so much, His Excellency. And ladies and gentlemen, what makes IFFI truly distinctive is its inclusive cultural spirit. The festival mirrors India's wider ethos of Ek Bharat, Shresth Bharat, as it brings together diverse creators, audiences, and artistic traditions. Right, Karan, before we move forward, we request the media to clear the way for the cultural troupe. Requesting all my friends in the clear the media way. to please clear the way. And our audience, do you remember Anupam sir's code word? Anupam sir, एक बार please अपना इशारा कर दीजिए जो आपने code word set किया था. For those who have come late, it is a code word when Anupam sir जब अपना सर खुजाएंगे वो वहां ताली बजाएंगे. So everyone claps together on my 1, 2, 3. I once again request all media persons to please clear the way as the cultural troops will start performing. Please don't get hurt. Take care of yourselves, media persons, as the cultural troops will move ahead with full force and momentum that you see. We are now going to witness a living, breathing celebration of India's soul. This grand synchronized showcase brings together 124 talented artists from 16 states across India. They represent the rich and rhythmic heartbeat of our nation. From Gusadi dance of Telangana to Sambalpuri dance of Orissa to the energetic bihu of Assam, every step, every rhythm, and every swirl weaves the story of unity in diversity. And in that spirit, ladies and gentlemen, let's now welcome all together Bharat Ek Sur, a unified folk symphony. Give it up for Bharat Ek Sur.
मेरी पतली कमर नाड़ा झुकेदार लियो मेरी पतली कमर नाड़ा झुकेदार लियो झुकेदार लियो जी झुकेदार लियो झुकेदार लियो जी झुकेदार लियो मेरी पतली कमर नाड़ा झुकेदार लियो मेरी पतली कमर नाड़ा झुकेदार लियो दो चक्रे वाड़ी जाइयो पीतल की टोकनी आइयो रे दो चक्रे वाड़ी जाइयो पीतल की टोकनी आइयो वो पण घट चालियो साथ नाड़ा झुकेदार जाइयो वो पण घट चालियो साथ नाड़ा झुकेदार लियो बाबा भाई जोड़ा एक सुर में एक ताल में बंधा है देश एक राग में एक सुर में एक ताल में बंधा है देश एक राग में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण
बंधा है देश एक साथ में। ये जननी भारत मेरा, ये भारत देश हमारा। अरुणाचल से गुजरात तक, कश्मीर से कन्याकुमारी, जननी भारत है हमारा, ये भारत देश हमारा। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। Fantastic! A standing ovation to this stunning and spectacular performance, ladies and gentlemen, and a grand salute to Vande Mataram. Ek Bharat, Shresth Bharat. This truly was India in motion, a visual poem of sound and color, a tribute to our heritage, our unity, and our pride. इसलिए कहते हैं भारत एक सुर, one India, one rhythm, ladies and gentlemen. एक बार जोरदार तालियां फिर से इस spectacular performance के लिए. What a wonderful performance that was. The troupe that just performed has also composed the song Bharat Ek Sur. क्या Let's बात. put our hands together, everyone, for such a spectacular performance by the artists. Fantastic. And now can I please request the dignitaries to please come forward for the official flag off of the opening parade. The moment that we all have been waiting for. Requesting our dignitaries to please join us on stage as the flag off the opening parade. As the flag rises today, ladies and gentlemen, it symbolizes not just commencement of IFFI, but a flag off to the spirit of creativity and cinematic excellence that India proudly shares with the world. What a historic moment, flagging off of the grand IFFI parade that marks the start of the 56th edition of the International Film Festival of India. The world is watching. India is taking pride in its culture, in its cinema, as IFFI kicks off in a very different avatar, a new avatar, unlike what we have seen in the last several decades. Fantastic. And with that, ladies and gentlemen, IFFI officially begins. Come on, everyone. Let the stories unfold, let dreams take flight, and let the world witness the magic of cinema like never before. And now, while I rush inside for the opening film, over to my friend Munmun. Thank you, Karan. So let's get started with the parade. First up is Triveni Kala Sang from our very own Goa. This one shows the culture of Goa. And the second one, closely following it, is Alexino da Silva from Goa. It shows the Carnival of Goa. We request all the dignitaries to please be seated and watch as the parade moves in its grandeur right in front of our eyes. What you are going to see is Goan Rom Tamil. It is a traditional Goan folk performance usually seen during the Shigmo festival in the month of March. This one is going to be accompanied by rhythmic beats of instruments like dole, tasha, kasali and others. It celebrates Goan culture, community spirit and festive joy. Goa Reds, roll it out. This is
All right, this is the opening ceremony of International Film Festival 2025. Attire that you're wearing, ma'am. And how are you feeling here at IFFI opening ceremony? You know, film festivals are very, very special, but this time it's totally different and very interesting because we saw so many cultural dances in their various elaborate get-ups, and of course, all the people connected with the FEA here, all the effort and hard work which goes into putting together such a big and international event. I'm happy to be here mainly as representative of Cinta. Of course, I am an actor for the last 40 some plus years, but as the president of Cine and Television Artists, I feel it's a special responsibility and a pleasure and an honor to be here. And I'm waiting to see some really good films. Absolutely. Any of my red carpet is incomplete if I don't meet Poonam Dhillon, ma'am. We always love to hear, right, ma'am? We always. You are there at all important occasions, so it's a pleasure to see you. Yes, and I think also, Poonam, ma'am, I would say you being a CINTA president, it's a huge responsibility. And of course, it's an international film festival happening here. So, what are you taking from here? What are the things you want to share with all the aspiring actors out there and pointers that you would want to share with people out there? You know, I mainly came with this in mind that I should be able to express to the government representatives who are here the problems and the issues faced by some of our actors. भव्य तरीके से आज आगाज हो चुका है। अगले 9 दिनों तक जो तस्वीरें आपके सामने आएंगी वो अपने आप में बेहद भव्य, बेहद अतुलनीय। और इस बार के महोत्सव की खास बात यह है कि सिनेमा के विविध प्रतिनिधित्व पर जोर दिया जा रहा है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारी शक्ति विजन के अनुरूप इफ्फी 2025 में 50 से ज्यादा फिल्में महिला निर्देशकों द्वारा निर्देशित होंगी। यह आंकड़ा महोत्सव की समावेशी और प्रगतिशील छवि को दर्शाता है। एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव भारतीय सिनेमा में दक्षिण भारतीय सिनेमा की बढ़ती वैश्विक प्रमुखता को आधिकारिक पहचान भी देना है। 9 दिन तक चलने वाले इस फेस्ट के अंतिम दिन यानी कि समापन समारोह में जाने माने अभिनेता रजनीकांत मौजूद होंगे,
उनके सिनेमा में 50 वर्ष पूरे करने के लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा आज जब आगाज हुआ इस महा उत्सव का, तो अभिनेता बालकृष्ण को 50 वर्ष के योगदान के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने सम्मानित किया है। इंडियन पैनोरमा की फीचर फिल्म श्रेणी का उद्घाटन तमिल फिल्म अमरन, जिसके निर्देशक राजकुमार पीरियासामी हैं, उनके जरिए कराया गया। ये एक मजबूत सांस्कृतिक और राजनीतिक संकेत है कि इफ्फी अब स्पष्ट रूप से पैन इंडिया प्रतिनिधित्व का केंद्र बनता जा रहा है। लगातार तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कलाकारों की तरफ से अपने अपने प्रदेशों की सांस्कृतिक विरासत को पूरी दुनिया के समक्ष पेश करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इससे बड़ा कोई फिल्म फेस्ट नहीं है। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त गोवा में चल रहे इस महाकुंभ पर है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर इफ्फी 2025 आपने नहीं देखा तो फिर क्या देखा, क्योंकि सिनेमा के महासागर का तट बना है गोवा राज्य है, जहां पर इस महाकुंभ के आयोजन को लेकर भव्य तैयारियां की गई। फ्लैग ऑफ हो चुका है अब से कुछ देर पहले और लगातार तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। भव्य झांकियां जहां पर तमाम राज्य, चाहे आंध्र प्रदेश हो, हरियाणा हो या उत्तराखंड हो, वहां की आकर्षक झांकियां लोगों को मंत्रमुग्ध करती दिखाई दी है। सिनेमा के रंग में पणजी पूरी तरह से सराबोर नजर आता है, जहां देश विदेश के फिल्म मेकर्स की मौजूदगी है। यहाँ पे सबसे ज्यादा भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग होनी है। इसके लिए 99 फिल्में, कुल 240 से लेकर 270 तक फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। दुनिया के तमाम देशों की फिल्में प्रदर्शित होंगी और तमाम दिग्गज इस वक्त गोवा की धरती पर मौजूद हैं, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। दुनिया की बेहतरीन फिल्में जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है और ये है सही मायनों में भारत की सांस्कृतिक ताकत, सिनेमाई ताकत जो पूरी दुनिया देख रही है। गोवा में 56वां इफ्फी महोत्सव शुरू हो चुका है, इफ्फी 2025। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखने को मिले। रेड कार्पेट पर तमाम दिग्गज आपको उस वक्त दिखाई दे रहे होंगे और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अलग अलग राज्यों की झांकियां वहां पर प्रदर्शित की जा रही हैं और सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में दर्शकों की मौजूदगी है। हर कोई इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। एक ऐसी यादें जो हमेशा उनके जहन में रहेंगी। बेहद भव्य आयोजन, बेहद शानदार तरीके से जिसका आज आगाज हो चुका है, शुभारंभ हो चुका है और प्रदेशों की ये झांकियां लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और मंच पर तस्वीरें देखिए, जो तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद हैं, उनके चेहरे पर एक मुस्कान है। ये बेहद गौरवमयी पल है गोवा राज्य के लिए। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत को आप अभी तस्वीरों में देख पा रहे थे। कुछ देर पहले फ्लैग ऑफ किया गया है और अब रंगारंग प्रस्तुतियां भी देखने को मिल रही हैं। अलग अलग स्टेट से पहुंचे कलाकार झांकियों के माध्यम से अपने प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कार्पेट पर दुनिया है और मंच पर भारत। ये तस्वीरें बेहद शानदार। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सिनेमा का असली महापर्व जिसका शानदार भव्य तरीके से आगाज हुआ है और ये झांकियां आप देखिए कि अलग अलग प्रदेशों के कलाकार बेहद आकर्षक झांकियों के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देश विदेश के फिल्म मेकर्स की मौजूदगी है। सिनेमा के महासागर का तट गोवा बनता दिखाई दे रहा है। ये बेहद गौरवमयी पल और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में दर्शकों की मौजूदगी देखने को मिल रही है। यानी अब से अगले 9 दिनों तक शानदार तरीके से ये भव्य आयोजन चल रहा है। मंच की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत को तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तमाम दिग्गज इस वक्त मौजूद हैं। अलग अलग झलक देखने को मिल रही है। फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। 240 से ज्यादा फिल्में हैं जिनकी स्क्रीनिंग की जानी है और सबसे ज्यादा भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग की जानी है इस महा उत्सव के दौरान, जो अगले 9 दिनों तक चलेगा, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें। अपने आप में यह आयोजन बेहद अनूठा, बेहद शानदार। मंच पर साउथ की सुपरस्टार बालकृष्ण को आप देख पा रहे हैं, जहां पर 50 वर्ष
के उनके योगदान को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने उन्हें सम्मानित किया है। मंच पर अभिनेता अनुपम खेर भी दिखाई दे रहे थे, जिनकी फिल्मों की स्क्रीनिंग की जानी है और मास्टर क्लास भी उनकी तरफ से लगाई जाएगी। तस्वीरें आप देखिए, 56वें इफी महोत्सव की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब जैसे जैसे शाम होती जा रही है, वैसे वैसे थोड़ा अंधेरा भी होता जा रहा है, लेकिन कलाकारों के जोश में कोई कमी नहीं है। वहां पर मौजूद जो दर्शक हैं, उनके उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं है और बेहद शानदार तरीके से तैयारियां की गई हैं। यानी अगले 9 दिनों तक पूरा गोवा उत्सव के मोड में रहेगा, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें। फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी, मास्टर क्लासेस लगेंगी, एक दूसरे से यहाँ पर सीखने का भी बेहद बेहतर अवसर मिलता है ऐसे महाफेस्ट के दौरान, जहाँ पर तमाम देश के दिग्गज पहुंचते हैं। 81 से ज्यादा देश इस वक्त इस समारोह का साक्षी बनने के लिए मौजूद हैं। 240 से 270 फिल्में बताई जा रही हैं, जिनमें स्क्रीनिंग होगी। सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बेहद शानदार तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। गोवा साक्षी बना है सिनेमा का महाकुंभ, 56वां महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसमें शामिल होने को लेकर लोगों में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। दर्शक बड़ी संख्या में आपको दिखाई दे रहे हैं और जो आकर्षक झांकियां इस वक्त निकल रही हैं, सिनेमा के रंग में रंगता हुआ दिखाई दे रहा है पूरा गोवा, जहां पर देश के अलग अलग हिस्सों की सांस्कृतिक विरासत भी देखने को मिल रही है। ये तमाम कलाकार पिछले कई दिनों से अपने अपने इस प्रदर्शन को लेकर तैयारियों में जुटे थे और आज आकर वो पल आया जब इन भव्य झांकियों के माध्यम से अपनी कला को प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है। अपने स्टेट की जो सांस्कृतिक धरोहर, जो सांस्कृतिक विरासत है, वो कितनी मजबूत, कितनी गौरवमयी है, ये पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आंध्र प्रदेश हो, हरियाणा, उत्तराखंड, तमाम राज्य हैं, हरियाणा, जहां पर इन प्रदेशों की झांकियों के माध्यम से सिनेमा में उनके योगदान को, उस राज्य के योगदान को दर्शाने की कोशिश की जा रही है और वहां के कल्चर को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। 56वां ये महा-उत्सव है, जिसका आगाज हो चुका है। सीधी तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता भी लगातार वहां पर मौजूद हैं, जो पल-पल की तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।